Welcome to Kotari Coaching Classes. In the last video, we have seen that the transaction, two aspect, two account, rules of account of debit and credit, personal account, real and nominal account. From the start, bookkeeping is an art as well as science of recording business transaction. बुक कीपिंग का मतलब बिजनेस में हुए व्यवहार को सिस्टमॅटिकली अपने बुक में लिखना, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं. मराठीमध्ये बुक कीपिंग म्हणजे काय? बिझनेसमध्ये झालेले सर्व व्यवहार पद्धतशीरपणे नियमाने नोटबुकमध्ये आपल्या वहीत लिहिणं याला काय म्हणतात? बुक कीपिंग म्हणतात. काय म्हणतात? बुक कीपिंग. टू स्टार्ट एनी बिझनेस वी रिक्वायर्ड कॅपिटल. कुठलाही बिजनेस शुरू करण्यासाठी आपल्याला भांडवल लागतं. कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए अपने को क्या चाहिए? कैपिटल. कैपिटल इज नोन एज अ भांडवल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल. मालकाने स्वतःच्या बिझनेस सुरू करताना जे काही ॲसेट, संपत्ती, मालमत्ता इन्वेस्ट केलेल्या असतात त्याला काय म्हणतात? कैपिटल. कोई भी प्रोप्राइटर ने अपने पास के पैसे या अदर एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट किए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. टू स्टार्ट द बिजनेस वी रिक्वायर्ड कैपिटल. ओके. देन इन बिजनेस देयर आर सम एसेट्स एंड सम आर लायबिलिटीज. एसेट्सचा अर्थ है संपत्ती, येणी. एसेट्सचा मतलब संपत्ती किंवा येणी. और लायबिलिटीचा अर्थ है देणी. आना और देना. एसेट को बोले तो जिन जिन से पैसा अपने को आना है, जो चीजें अपनी खुद की है, द थिंग विच इज अवर ओन, इट इज नोन एज एसेट. एंड दोज थिंग विच आर नॉट अवर ओन वी मेक पेएबल टू देम, इट इज नोन एज अ लायबिलिटी. आणि जे आपण दुसऱ्याला देणं लागतो त्याला लायबिलिटीज म्हणतात, आणि जे आपल्याला दुसऱ्याकडनं येणं त्याला काय म्हणतात? ॲसेट. देर आर two types of asset, fixed asset and current asset. Two types of liability, fixed liability and current liability. Another one is added: fixed assets, current asset, tangible asset, intangible asset, fixed liability, short term liability, long term liability. So all these are related with the bookkeeping and accountancy. Every businessman record all his transaction in a chronological order. In a book it is known as a journal. So first book of the every business is a journal. Journal is known as the book of prime entry. Journal have 5 columns: date, particular, LF, debit amount and credit amount. While recording the transaction in journal, it is known as a journalizing. And in which form it must be recorded, it is known as a entry. One account is debited, another account is credited. Debit and credit करने के लिए we know the rule of the debit and credit. After recording this transaction, under it there is a brief description of transaction is recorded. It is known as a narration. Entry के नीचे short में being से start होता है. It is known as a narration. Stock mean unsold goods lying in the business. Stock का मतलब क्या? मराठीमध्ये त्याला साठा म्हणतात. न विकला गेलेला माल बिझनेस मध्ये जो असतो त्याला साठा म्हणतात. इट इज नोन एज अ स्टॉक. ॲसेट्स मीन्स व्हॉट वी ओन, यानी जे आपलं स्वतःचं आहे त्याला काय म्हणतात? ॲसेट. जो अपना खुद का है उसको क्या बोलेंगे? एसेट. एंड व्हाट इज लायबिलिटी? व्हाट वी ओ, OWO बोले तो देना. अपने जो दूसरे को देना है अपने को, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी. आपण जे दुसऱ्याला देणं लागतो त्याला काय म्हणतात? लायबिलिटी. बिजनेस बोला तो एसेट भी रहेगा और लायबिलिटी भी रहेगा. So assets, liability, capital. Drawing means cash, goods or any asset withdrawn by proprietor from his business. It is known as a drawing. अपने बिजनेस में से कोई भी प्रोप्राइटर मालक ने खुद के लिए या घर के लिए पैसा, माल या संपत्ति यूज किया तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग. ड्रॉइंग म्हणजे काय? मालकाने स्वतःच्या बिझनेसमधनं स्वतःच्यासाठी किंवा स्वतःच्या घरच्यासाठी पैसे, माल अथवा संपत्ती घेतलेली असेल तर त्याला काय म्हणतात? ड्रॉइंग. कॅपिटल अकाउंट नॉर्मली शो क्रेडिट बॅलन्स. ड्रॉइंग अकाउंट शो द डेबिट बॅलन्स. ॲसेट्स अकाउंट नॉर्मली शो द डेबिट बॅलन्स. लायबिलिटी अकाउंट शो द credit balance. Expenses account show the debit balance.
and income account show the credit balance. Debtor is our asset, show the debit balance. Creditor is our liability, show the credit balance. Expenses को debit जाता है, income को क्या जाता है, credit. When we receive some services and then we pay the money, it is known as the expenses. For example, we use the electricity bill, service is used. For this purpose, we have to make the payment of the bill. That is known as the expenses. And income, by rendering services, we got earn some money. It is known as the income. फॉर एग्जाम्पल अपने पास खुद का जगह है, किसी को भाड़े से दिया, भाड़ा अपने को मिलता है, अपना क्या हो गया, इनकम. सो एक्सपेंस है डेबिट, इनकम क्रेडिट, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, ड्रॉइंग डेबिट, कैपिटल credit, purchase debit, sale credit. Like this in business, there are debit and credit. But for giving all these debit and credit, we must need to contain these three account rules. Personal account, debit the receiver and credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expenses, losses, credit all gains and income. Thank you.